under the Chinese Communist regime. The Tibetan people have been traumatized by the systematic violations of their most fundamental human rights, including cultural and national identity, since the People's Republic of China invaded Tibet in 1949. Over the last 7 decades, the situation in Tibet has been deteriorating to the extent that it is now facing imminent threat of cultural genocide and total annihilation of the Tibetan identity. Historically, Tibet was an independent nation having a defined territory, distinct population, governments, and maintained diplomatic relations with its neighboring countries. Geographically, Tibet existed as a buffer state for more than 2,000 years between the two Asian giants, India and China, until its illegal occupation by China in 1959. Tibet and India have a millennia-old history of friendly coexistence and natural exchanges. There have been neighboring countries with rich ancient as well as contemporary civilization ties. They have never been in past history any sort of territorial boundaries between India and China. However, such a boundary has now came into being, and that boundary continues to remain a subject dispute, and behind those boundaries are our Tibetan brothers and sisters who continue to suffer under the subjugation representative and repressive policy of China. For the third consecutive years, Tibet has again been ranked as the least free country in the world. This year in the world 2023 Freedom Index report of the Freedom House last year, UN human rights experts expressed serious concern over the large-scale colonial boarding schools in Tibet rapidly being implemented on a massive scale and referred to it as a way to assimilate Tibetans into minorities and culture, contrary into international human rights standards. Likewise, the forced mass DNA sample collection of the Tibetans, including kindergarten school, in an intrusive scrutinization of measures under. Okay, then we have about 5 points to view of these circumstances. We propose the following appeals to your government and urge you to these 10 points: recognize Tibet as an occupied nation with its own independent and sovereign past backed by historical evidence. Number 2, desist from endorsing Chinese false narrative by labeling Tibet as a minority, referring to Tibet's occupation as an internal issue of Beijing, and proclaiming Tibet as a part of China, thereby aiding China's colonization of Tibet and the subjugation of Tibetans while denying us Tibetans the space and scope to negotiate for more meaningful freedom for Tibetans. Call on the People's Republic of China to re-engage in substantive dialogue with the representatives of His Holiness the Dalai Lama without preconditions to resolve the Tibet-China conflict through the real way policy of seeking genuine and meaningful autonomy within the framework of the PRC Constitution. Fourth, call upon the United Nations Framework Convention on Climate Change to launch scientific research studies on the PR government policies, exploitation of Tibet's natural resources, and its negative impact on global climate change. Number 5, pressure China to ensure access to independent human rights organizations to monitor and report on the human rights situation, and likewise extend standing invitation to UN special reporters, to particularly those focusing on freedoms of opinions and expression, peaceful assembly and association, and human rights defenders, facilitating their visit to Tibet as soon as possible. Number 6, urge the PRO government to unconditionally release all Tibetan political prisoners, including Gelgun Chögyam, 11th Panchen Lama, whose whereabouts and well-being remain unknown since 17 May 1995. Number 7, place the human rights situation in Tibet in the context and the nature of the Tibet-China conflict as international and unresolved. Join the world leaders in displaying concern over human rights violation and religious repression in Tibet, and urge the government to adopt an act to put Chinese officials on the national list of sanctions. Number 8, establish a national legislative framework to tackle China's network authoritarianism and disinformation campaign which cause public distrust in democratic institutions, political polarization, as well as regional, global, geopolitical stability and peace. Number 9, expand and deepen
your official and diplomatic engagements with the Central Tibetan Administration, which is the continuation of the former government Tibetan Independent Tibet in Lhasa as the legitimate representative of the Tibetan people. Number 10, to urge the legislators to express their concern, raise the voice of the human rights violation in Tibet at all the available platforms. We remain immensely grateful to your government and people who stand for Tibet, for standing for truth and for keeping alive our faith in peace, justice. Please accept the assurance of our highest consideration thanking you from our Parliament office. Thank you. Are you speak Hindi? Yes. Good evening, Hindi from Indian. तिब्बत और भारत के संबंध जो अभी अमेरिका और इंग्लैंड और अन्य देश के साथ संबंध हो रहा है इसी तरह नहीं है। हमारा भारत और तिब्बत का संबंध है, हजारों साल के संबंध है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, जो हमारा धर्म है, सभी की हमारा पुराना बहुत संबंध है। तो जो चीन का विस्तार नीति एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है वो आज शुरू नहीं हुआ, कल से शुरू नहीं हुआ, ये 1949 से शुरू हुआ है जो विस्तार नीति है चीन का। उसके वजह से 1959 में तिब्बत के देश में कब्जा किया है। उसके बाद 1962 में चीन ने भारत देश को कब्जा करने की कोशिश किया था। फिर 1954 में 5 साल के पीस एग्रीमेंट होते हुए भी उनको नेगलेक्ट करके मुख से चीनी हिंदी भाषा कहते हुए भारत के बाद अग्रेशन किया, आक्रमण किया था। तो इसलिए जो विस्तार नीति जो चीन कर रहा है ये हमारा देश को बड़ा अकेला नहीं, सारा साउथ एशिया कंट्री में भी एक खतरा चल रहा है, खतरा हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहता है कि तिब्बत इशू, तिब्बत की समस्या तिब्बत का अकेला नहीं है, ये भारत की समस्या है, साउथ एशियन समस्या है। खास करके आपको ये जरूर जागरूकता होना चाहिए आपके मीडियम के थ्रू से, क्योंकि जितना 90% ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंक्लूडिंग इंडिया, तो जो साउथ एशियन कंट्री है उसका जो पीने का पानी है वो तिब्बत से बह रहा है। 10 मेजर रिवर्स फॉलिंग फ्रॉम तिब्बत। तो उसी के लिए चीन उसको पंगा लेने के लिए 11 डैम पहले से बन चुका है और अभी बन रहा है कि सुपर डैम बना रहा है। उसको अगर बन जाएगा तो हमें साउथ एशियन कंट्री से और भारत को पानी की दिक्कत पड़ेंगे। तो इसीलिए हम सबको जगाना चाहिए। वी शुड अवॉइड, वी शुड अलर्ट, वी शुड स्टैंड फॉर द politically stand against the Chinese. Indian and all the loving peace country should stand against the Chinese expansionist विस्तार नीति के खिलाफ खड़ा होना के जरूर है। इसके लिए दूसरा बात हम यहाँ आया है, हम तीन को हमारा गवर्नमेंट ने भेजा किया है कि भारत की गवर्नमेंट को भारत के निवासी सभी लोगों को हमें धन्यवाद कहने के लिए भेजा, क्योंकि चीन ने जब हमारा देश को कब्जा किया था तो हम 1959 में हम भारत में हमारा गुरुजी का साथ शरण लिया। तब से हमें हमारा संस्कृत, हमारा धर्म, हमारा लैंग्वेज सारा जीवित रखने के लिए आप लोगों ने सुविधा दिया है। हमें एक माँ ने आपको बच्चे को प्यार दिया, उसी तरह भारत देश में भारत लोगों ने हमें पाला पोसा है। उसी की वजह से तिब्बत की समस्या में नहीं रहा है। आजकल तिब्बत की समस्या एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय के इशू बना है। ये सारा भारत के दिन है, भारत के लोगों का दिन है। इसलिए हमें हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए भेजा है। तो कल परसों 27 तारीख से हमें यहाँ है, हमारे जो 45 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उससे 11 ग्रुप में बांटा गया है। हम हर एक आधा साल में हर दुनिया में हर स्टेट में जाता है, इसके समर्थन लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, लोगों से हमारे तिब्बत में क्या हो रहा है, क्या जो हो रहा है उसी के सिलसिले में अभियान चलाने के लिए हमें भेजा गया। इस बार मेरा साथी तेम्बा यमला जी और ईशी दुमला जी, हम तीनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल में ड्यूटी लगा गया। तो हम 27 तारीख से यहाँ पर लोगों ने, सभी पार्टी के नेता लोगों ने, सभी जो हमें मिला था, यहाँ प्रतिनिधि मिला था, जो NGO से मिला था, कोई एजुकेशन का मिला था, सभी ने हमें बहुत
और पूर्व में हमें समर्थन दिया था, उसके लिए हम आपके थ्रू सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी। Sir, now